Hi everyone, this is Chandni Singh and welcome to my channel, and today I'm going to show you a beautiful matte brown smoky look on the gorgeous Anamika. I've already prepped and primed her skin and I'm starting with the eyebrows. Eyebrows को define करके मैं लगा रही हूँ P.Louise का eyeshadow base in shade 4 which is perfect for Anamika's deep complexion. अनामिका की आंखों के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ नताशा डेनोना का बीबा पैलेट एंड आई हाईली रेकमेंड दिस पैलेट इफ़ यू आर अ मेकअप आर्टिस्ट. इसमें सारे न्यूट्रल्स हैं और बहुत ही खूबसूरत शेड्स हैं. All the brushes that I'm using are from my own brand, the Nars Studio, launching in August soon. I prefer a smoky eyeliner with a matte brown smoky eye more than a winged eyeliner or a stark eyeliner. एंड यहाँ पर मैं स्मोकी आईलाइनर करके उसको ब्लैक आई शेडो से ज़रूर सेट करती हूँ सो दैट इट लुक्स मोर इंटेंस एंड मोर सल्ट्री. मस्कारा के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मस्कारा डिस्पोजेबल्स एंड आई हाईली रेकमेंड कि अगर आप एक मेकअप आर्टिस्ट हैं यू मस्ट फॉलो कंप्लीट हाइजीन रूल्स. Deeper skin tones के लिए I always like to use a little bit of orange corrector and of course my go-to concealers remain the MAC concealers. Make sure you blend it out perfectly. Also using the iconic Illuminator and I absolutely love the shade Original for deeper Indian skin tones. तो माई टॉप टिप फॉर डीपर इंडियन स्किन टोन्स, अगर आप चाहते हैं कि उनकी स्किन ग्रे ना हो, मेक श्योर दैट योर फाउंडेशन कलर इज एन एग्जैक्ट मैच एंड देन हाईलाइट विद अ ब्राइटर कलर जस्ट द वे आई एम डूइंग इट. Opting for Benefit Hoola contour only but in a darker color and the perfect blush and highlight to make sure that Anamika's skin looks absolutely lit. Whenever I do matte brown smoky eye, I love to team it up with a nude lipstick. I think it looks so glamorous and that's exactly what I'm doing. However, I'm still starting with a deeper lip liner and then I build it up and make it lighter. So I hope आप सबको ये tutorial पसंद आया. Do let me know in the comments what you think about the entire look. She's wearing beautiful jewelry from Purab, Paschim and a gorgeous outfit from Nitika, Gujral. So thank you everyone for watching. Take care.